قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. وقال إنما حمله على لولا أن تعيرني قريش يقول إنما حمله على ذلك الجزاء لا أقررت بها عينك. وأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صدق الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. மேலான கண்ணியமான கணவான்களை சகோதரர்களே, அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத் அம்மனவாலஹு நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய ஆக பெரிய ஒரு உன்னதமான ஒரு பாக்கியம், இந்த முழு உலகமும் ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு பாக்கியம், தீனுடைய இஸ்லாத்துடைய ஈமானுடைய பாக்கியம். My dear respected brothers, Allah Ta'ala gave this Iman. This one more than valuable, this dunya and dunya's content. That much valuable kalima Allah Ta'ala give it to us. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কাছে ঈমান দিয়েছেন, এই ঈমানের দাম কত বেশি। দুনিয়া এবং এর ভিতরে যা কিছু আছে এই সমস্ত কিছু থেকে ঈমানের দাম বেশি। இமாம் இப்னு ஜௌஸி ரஹிமஹுல்லாஹ் எழுதுறாங்க கிதாபுல, ஒரு மனிதனுக்கு நாளை கியாமத்துல நரகத்துல இருந்து ஒரு துளி அவன் உடம்புல தீண்டுமெண்டா, நரகத்துடைய நெருப்பிலிருந்து ஒரு துளி நெருப்பு அவனுடைய உடம்பை தீண்டுமெண்டா, அவன் உலகத்துடைய நெருப்புல கைலுலாவுடைய தூக்கம் தூங்குவான். My dear respected brothers, if you hereafter Jannat fire one drop, if you touch our body, how much pain, there's so much pain, that we can't describe that much powerful, they call laugh, more than laugh, the power. If you, one person, if you, this dunya have fire, and this dunya fire, that person can sleep, that much low fire. Maulana explained, and hereafter Jahannam fire is more strong, but this dunya fire is very low fire. If you touch this dunya fire, we can't what you call image, that much painful. But if you see that fire, Jahannam fire, this dunya fire is he is sleeping khailullah, that much low fire. He want to say. মেহমান বলতেছেন যে ভাই দোস্ত, যে আজকে এই যে দুনিয়ার আগুন আর যে জাহান্নামের আগুন, এটা তুলনা বুঝাইছে যে আজকে দুনিয়ার আগুনে আমরা সামান্য আগুনেও যদি আমরা চুলার আগুনে হাত রাখতে যাই, এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব না, হয়তো 1 সেকেন্ডেও রাখা সম্ভব না, বা এর বেশি রাখলেও বাস 1 সেকেন্ড রাখা সম্ভব না। কিন্তু বলছে যে এটার থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ বেশি হইতেছে জাহান্নামের আগুনের তেজ। তো বলছে যে জাহান্নামের আগুনে যাকে জ্বালানো হবে, তাকে যদি তখন দুনিয়ার আগুনে শোয়াও দেওয়া হয়, সে মনে করবে যে আমাকে তো নরম বিছানায় ঘুমায় রাখছে। তো তাহলে আমি চিন্তা করি যে জাহান্নামের আগুনের অবস্থা কি। আল্লাহ পাক সমস্ত নবীদেরকে পাঠাইছে মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো। மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, இந்த கலிமாவின் மூலமாக அல்லாஹு தஆலா அந்த நரகத்து நெருப்பை விட்டு உடம்போல பாதுகாத்திருக்கிறார். My dear respected brothers, for because of this kalima, Allah Ta'ala serve in Jahannam. Allah Ta'ala serving for us because of this kalima. বলছে যে কিন্তু বলছে এই যে জাহান্নামের এই প্রকাণ্ড আগুন বা তেজি আগুন, এটা থেকে বাঁচাইতে পারে আমার এই কালেমা। এই কালেমাই আমাকে এই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাইতে পারে। மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, நாம் முஸ்லீமாக இருக்கிறோம் என்றா இது எந்த அவங்களுடைய கெட்டித்தனம் கிடையாது. இது எந்த அவங்களுடைய கெட்டித்தனம் கிடையாது, நம்முடைய மூதாதையர்களுடைய நம்முடைய பெற்றோர்களுடைய கெட்டித்தனமும் கிடையாது. இது அல்லாஹ்வுடைய ஒரு நிஅமத், அல்லாஹ்வுடைய ஒரு அருள் பாக்கியம். My dear respected brothers, this kalima we recite kalima, this is not our talent, this is not our parents' talent also. Allah Ta'ala chosen us, because of this kalima, Allah Ta'ala chosen us. So many Anbiya alayhi salam,
Allah Ta'ala chosen us for this kalima. ভাই বলতেছেন যে ভাই বলতেছেন যে এই যে আমাদের কালেমা পড়ছি এটা আমাদের কোনো কৃতিত্ব নাই এটা, হ্যাঁ, কিংবা আমার বাপ মাওয়ারও কোনো কৃতিত্ব নাই। এটা শুধুমাত্র সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি এই কালেমার জন্য আমাকে পছন্দ করছেন, যিনি আমাকে এই কালেমার দান করছেন। আমার কোনো যোগ্যতাই ছিল না কালেমা নেওয়া, কিন্তু আল্লাহ পাক মেহেরবানি করছেন, দয়া করছেন, আমাকে এত দামি জিনিস আমাকে একটা বিনা চাওয়াতে আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছেন। மேலான பெரியார்களே சகோதரர்களே, இது எந்த உங்களோட கெட்டுத்தனமாக இருக்குமெண்டா நபியுடைய முழு குடும்பம் இஸ்லாத்தை தழுவிருக்கு. நபியுடைய முழு குடும்பமும் இஸ்லாத்துக்குள்ள இருந்திருக்கும். நபியுடைய உற்ற எல்லா கட்டங்களையும் நபியை பாதுகாத்து, நபியை அரவணைச்சு, நபியோடு இருந்து, நபிக்கு கஷ்டம் வரக்கொள்ள ஆறுதல் சொல்லி, நபிக்கு துன்புறுத்தல் வரக்கொள்ள நபி ஆறுதல் சொல்லி, நபியை பாதுகாத்து எல்லா கட்டத்திலையும் உதவியாக இருந்த ஒரு மனிதர் தான் அபூ தாலிப். இவருக்கு அல்லாஹு தாலா ஹிதாயத்தை கொடுக்கல. My dear respected brothers, if we our talent we can get kalima, you know, in Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, such a Abu Talib, how much help for Sallallahu Alaihi Wasallam. So many difficult time come, what they call Abu Talib. He survived for Rasulullah Alaihi Wasallam. So many difficult time. How much Mushrik give trouble, you know. Every trouble time, Abu Talib served the Rasulullah Alaihi Wasallam. If you, our talent we can get kalima, Abu Talib also get kalima, you know. It's not our talent. Allah Ta'ala want to choose the person. দেখেন কতটা চিন্তা করলে কতটা গভীর কথা এটা। দেখেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো দামি মানুষ তো আর কোনোদিন আগেও আসেনি, পরে আসবে, ওনার থেকে দামি মানুষ নাই। অথচ ওনার চাচা আবু তালেব উনি কিনা সাহায্য করেন নাই বলে, ওনাকে মুশরিকদের বিভিন্ন রকম অত্যাচার থেকে উনি কিন্তু ওনাকে বাঁচায় রাখছিলেন। সেই হিসাবে তো ওনারই কালেমা পাওয়ার বেশি হক ছিল, কি বলে? কিন্তু আবু তালেব তো কালেমা পায় নাই। আবু তালেব যে নাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সমস্ত রকমে সাহায্য করছে, সে আবু তালেবের কালেমা নসিব হয়নি। তাহলে আল্লাহ পাক ওইটার থেকেও আল্লাহ পাক আমার ভিতরে আল্লাহ পাক জানে কি আছে, আমাদের ওই তার থেকে আলাদা করে আল্লাহ পাক আমাদের কালেমা দান করছে। এই জন্য এটা চিন্তা করার বিষয় যে আল্লাহ পাক আমাদের কত বড় নিয়ামত দান করছে। மேலான பெரியார்களே சகோதரர்களே, அபூ ஹுரைரா রাদিয়াল্লাহு அறிவிக்கிறாங்க, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய சாட்சா அபூ தாலிபுக்கு குல் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அஷ்ஹது லக பிஹா யௌமல் கியாமah, என்னுடைய சாட்சாவே நீங்க லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்னு சொல்லுங்க, உங்களுக்கு நான் கியாமத்துல அல்லாஹ்வுக்கு உங்களுக்கு நான் சாட்சியாக இருக்கிறேன்னு சொன்னாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். மேலான பெரியார்களே சகோதரர்களே, அந்த அபூ தாலிப் உரைத்த பதில் என்ன தெரியுமா? அந்த அபூ தாலிப் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா? லவ்லா அன் துஐரனி குரைஷுன் யகூலு இன்னமா ஹமலஹு அலா தாலிகல் ஜஸா லா கர்து பிஹா ஐனக். இந்த குறைஷிகள் என்ன குறை கூற மாட்டாங்க என்று சொல்லி இருந்தா நான் இந்த கலிமாவை சொல்லி உன்னுடைய 2 கண்களையும் குளிர செய்திருப்பேன் என்பது ஆசை. மேலானவர்களே, கண்ணியமானவர்களே, அல்லாஹ் தஆலா வஹி இறக்குறான், இன்னக லா தஹ்தி மன் யஷா வ இன்னல்லாஹ யஹ்தி மன் யஷா. இன்னக லா தஹ்தி மன் யஷா, நபியே நீங்க நாடினவங்களுக்கு ஹிதாயத் கொடுக்க முடியாது. இன்னக லா நீங்க நாடியவர்களுக்கு ஹிதாயத் கொடுக்க முடியாது. நிச்சயமாக நாங்க யாரை நாடுறோமோ, யாரை விரும்புறோமோ அவர்களுக்கு தான் ஹிதாயத் கொடுக்கும். Abu Hurairah narrating, Rasulullah say, "Oh Chacha, you know, please you recite kalima. I will witness for you in hereafter." And Rasulullah make more please, you know, more please for Chacha. You know, that's much Allah Rasulullah love is Chacha. You know why he more difficulty time he helped for Rasulullah. You know, so many time Rasulullah request, but Abu Talib refused. You know, and Abu Talib told to Rasulullah, "Oh my son, I will say kalima, but mushrik, they making for die. I was scared for that one. That's why I going to tell kalima." And his qalb not open, you know. His qalb is not open to say kalima, you know.
he think his companion make maybe some misunderstanding, and he couldn't say kalima. And after that, Allah Ta'ala revealed the ayat. Maulana recite, you can't give anyone to hidayat. We will choose. We will choose. What person want to get hidayat, we will choose. Allah Ta'ala said to Rasulullah, Rasulullah, if you not, Allah Ta'ala said one time, if we not created Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, I'm not going to create this dunya. But that much valuable Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. But this matter, but Abu Talib, he haven't got hidayat. Allah not give hidayat. That and Allah Ta'ala saying, Quran, you can't give hidayat. We are giving hidayat to everyone. দেখেন আমি বলছি যে কথা যে আজকে যদি আমাকে কেউ বিপদের সময় বারবার সাহায্য করে, তার প্রতি আমার কি পরিমাণ মায়া দয়া থাকে বলে। আমার বিপদে যদি কেউ একটা লোক, তাকে আমি সবসময় কিছু দিতে যাব, কোনো উপকার করতে যাব, আমার দিল চাবে, তার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইসলামের মধ্যে কত নির্যাতন অত্যাচার গেছে, এই সব কিছু ওনার আবু বকর জীবদ্দশায় উনি সমস্ত কিছু থেকে ঠেকায় রাখছিলেন। মুশরিকরা অনেকভাবে অনেক কষ্ট চেয়েছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে, উনি সব সময় এরকম গার্ড দিয়ে রাখছিলেন। তো বলতেছে যে এই আবু তালেবের কাছে, ওনার চাচার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বারবার কালেমাকে পেশ করছিলেন, বারবার এরকম বিভিন্নভাবে বুঝাইছিলেন যে আপনি এরকম ঈমান নিয়ে আসেন। তো বলতেছে যে আবু তালেব কি বলছে যে দেখো ভাতিজা, যে আমি তো বলছে যে আমি যদি ঈমান আনি তো আমার কওমের লোকজন এটা বলবে যে আমি মৃত্যুর ভয়ে কালেমা পড়ছি। আবু তালেব মৃত্যুর ভয়ে কালেমা পড়ছে, অর্থাৎ সে তার আশপাশের লোকজনকে দেখতেছিল, সে আল্লাহর দিকে সে ঝুঁকতে পারতেছিল না। আসলে তার দিল আসলে আল্লাহ পাক খুলেন নাই, তার দিলের মধ্যে আল্লাহ পাক আসলে হেদায়েতকে খুলেন নাই। তো দিলের মধ্যে হেদায়েত খোলা এটা তো আল্লাহ পাকের কাজ। তো যখন এই জন্য আবু বকর দুনিয়া থেকে চলে যায়, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাযিল করেন। ওই আয়াতটা বলছেন উনি, যে বলছে যে খুব মশহুর আয়াত। এই আয়াতের মধ্যে অর্থ এরকম যে বলছে যে হে রাসূল, আপনি যাকে চান তাকে তো হেদায়েত সে তো পাবে না, আমি যাকে চাই সে হেদায়েত পাবে। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে চায় তাকেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হেদায়েত দান করেন, রাসূল যাকে চায় তাকে হেদায়েত পাবে না। তো বলছে যে এইটা যে কত একটা আশার আয়াত, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকে চান তাকেই আল্লাহ পাক, তো আল্লাহ পাক চাইছেন, তো আমরা এক প্রকার কালেমা পড়ে আমরা হেদায়েত পেয়ে গেছি। এই জন্য সবাই শুকর আছি তো ইনশাআল্লাহ। மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, யார் தெரியுமா அந்த அபு தாலிப்? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 2 வருடங்கள் அந்த ஷுஐப் அபி தாலிப்ல எந்த வியாபாரமும் இல்ல, எந்த கொடுக்கல் வாங்கலும் கிடையாது, வியாபார தடை விதிக்கப்பட்டிருக்குது. நபி அவங்களோட குடும்பத்தோட வியாபார தடை விதிக்கப்பட்டிருக்குது, யாரும் எந்த கொடுக்கல் வாங்கலும் செய்ய முடியாது. இந்த வியாபார தடைகளோட நபி அவர்களோட அந்த அபு தாலிப் 2 வருடங்கள், பிள்ளைகள் எல்லாம் பசியால் அழுகுது, தண்ணி இல்ல, பசி இல்ல, சாப்பாடு இலை கொலைகளை சாப்பிட்டு 2 வருடங்கள் அந்த ஷுஐப் அபி தாலிப்ல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களோட உற்றாக இருந்தார். இவர்தான் இந்த அபு தாலிப். மேலானவர்களே, கண்ணியமானவர்களே, My dear respected brothers, who is Abu Talib? Who is Abu Talib? Abu Talib is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sacha. Because of this kalima, mushrik make a lockdown, Suhaib Abu Talib. The Muslims can't do any business, they can't come out from that Suhaib Abu Talib, they make a lockdown, 3 years they struggle, they food all finished, they try to eat leaves, leaves, how to animals eating leaves, that leaves the Muslims eat, how to make what do you call, animals make pizza, same like this the human and Sahaba also did. Small kids, the crying sound is more far they hear. That time Abu Talib with Rasulullah alayhi salam, he helped to Rasulullah alayhi salam. That much the difficulty time Abu Talib helped. বলছিলেন যে
এই মুসলমানদেরকে কাফেরে যে কি অবর্ণনীয় কষ্ট দিছে তার একটা উদাহরণ হলো যে প্রায় 3 বছর তারা মুসলমানদেরকে পুরা এক জায়গায় নির্বাসনের মতো পাঠিয়েছে। মুসলমানদেরকে সাথে তার ব্যবসা বাণিজ্য কেনা বেচা লেনদেন সব কিছু বন্ধ রেখে মুসলমানদেরকে যে লকডাউনের সময় যেটা ছিল আর কি ওই রকম একটা অবস্থার মধ্যে যে একেবারে বদ্ধ আবদ্ধ অবস্থা মুসলমানদের, যে মুসলমানদের এমন অবস্থা হয়েছে যে মুসলমানদের একসময় খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এবং মুসলমানরা বাধ্য হয়ে গাছের পাতা খাইছে এবং বকরির যে লেদা পায়খানা এটার মতো পায়খানা তারা করছে। তো এরকম একটা মুসলমানদের অবর্ণনীয় অবস্থা গেছে এবং বলছে যে এরকম অবস্থার মধ্যে বলছে বাচ্চাদের কান্না বলছে যে দূর থেকে শোনা যেত, বাচ্চারা কষ্ট হইতেছে, কাঁদতেছে, ক্ষুধার যন্ত্র, বাচ্চারা কাঁদতেছে বলে বাচ্চাদের কান্না কিরকম বলেন, কান্না থামে নাকি, বলে কান্না থামতে যায় না, এরকম ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাচ্চারা কাঁদতেছে, এরকম একটা কষ্টের মধ্যে মুসলমান ফেলছে। ওই রকম সময়ও বলছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আবু তালেব কি করছে, সাহায্য করছিল, ওই রকম সময় সাহায্য করছিল আবু তালেব। এটা ছিল আবু তালেব। மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, மாறாக அல்லாஹ் யாருக்கு ஹிதாயத்து கொடுத்தான் தெரியுமா? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க யாரை கண்டா, எந்த வஹ்ஷியை கண்டா, வஹ்ஷி இப்னு ஹர்ப கண்டா நீங்க கண்ட இடத்துல கொல்லுங்கண்டாங்களோ, அவர் ஹரத்துக்குள் இருந்தாலும் அவர் கபாவுடைய திரையை பிடிச்சு கொண்டிருந்தாலும் அவரை கொல்லுங்க என்று சொன்னானோ அல்லாஹ் தஆலா அந்த வஹ்ஷிக்கு ஹிதாயத்து கொடுத்தார். My dear respected brothers, Wahshi did more damage to Islam. Rasulullah such a what do you call Hamza radiallahu ta'ala also killed Wahshi, and for that purpose, and Rasulullah sallam said to everyone, every Sahabas, if any place you saw Wahshi, you want to kill. If he in Kaubatullah, he hanging Kaubatullah screen, that cloth, Kaubatullah cloth, if he hanging, and that time if he saw, you kill. And Rasulullah some give order, that much Wahshi make more damage to Islam. বলতেছিলেন যে এক সাহাবী ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু আনহু, উনি কে ছিলেন? উনি ছিলেন হামজা রাসূলের চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু, বলছে যে হত্যাকারী, হামজা শহীদ করছিলেন উনি। তো বলছে যে হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে শহীদ করছিলেন। তো বলছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাতে খুব কষ্ট পাইছিলেন যে ওনার প্রাণপ্রিয় চাচা হত্যা করছে, খুব মনে কষ্ট পাইছিলেন। তো বলছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলছিলেন যে এই ওয়াহশীকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই তাকে কতল করা হবে, সেখানেই তাকে যাতে হত্যা করা হয়, এমনকি সে যদি কাবা ঘরের গিলাফ ধরেও থাকে তাও যাতে ওয়াহশীকে হত্যা করা হয়। மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, அபூ தாலிபுக்கு ஹிதாயத் இல்லை என்று சொல்லி ஒரு குர்ஆனுடைய ஆயத்தை இறக்கினான் அல்லாஹ். வஹ்ஷிக்கு ஹிதாயத்து கொடுப்பதற்காக வேண்டி 3 குர்ஆனுடைய ஆயத்துகள் இறக்கினான். My dear respected brothers, Allah Ta'ala revealed the Quran for Abu Talib matter only one ayat. One ayat Allah Ta'ala revealed. No one can give hidayat, only we can give hidayat. And Allah only one ayat Allah Ta'ala revealed. But Wahshi's matter, Allah Ta'ala revealed three ayat. Allah Ta'ala revealed 3 ayat. Allah Ta'ala want to give hidayat to him. বলছে যে এই যে আবু তালেবের ব্যাপারে কোরআন শরীফে আবু তালেবের হেদায়েত পায় নাই, এই বিষয়টাকে সাফ করার জন্য আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে একটা মাত্র আয়াত নাযিল করছে। কিন্তু এই ওয়াহশী যে নাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু এত কষ্ট দিছে, কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে হেদায়েত দিবেন, এটার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 3টা আয়াত কোরআন শরীফে নাযিল করছে ওয়াহশী হেদায়েতের জন্য। மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முதல் தடவை வஹ்ஷி கால் அனுப்புறாங்க, தூது அனுப்புறாங்க இஸ்லாத்துக்கு வா. வஹ்ஷி என்ன சொல்றார் தெரியுமா? அல்லாஹு தஆலா நான் செய்யாத எந்த பாவம் பூமிக்கு மேல இல்ல, அல்லாஹ் என்னை எப்படி மன்னிப்பான் என்ற கேள்வியை கேட்கிறார். அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனுடைய ஆயத்தை இறக்குறான், இன்னல்லாஹ லா யக்ஃபிரு அன் யுஷ்ரக பிஹி ஷைஆ வ யக்ஃபிரு மா தூன ذلك லிமன் யஷா. அல்லாஹ் யாருக்கு நாடுறானோ அவன் விரும்பிய மக்களுக்கு அவன் ஷிர்க்கை தவிர எல்லா பாவங்களையும் மன்னிச்சிடுவான் என்ற குர்ஆனுடைய ஆயத்தை
வைக்கிறான். இந்த ஆயத்து வஹ்ஷியிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது. வஹ்ஷி சொல்றாரு இந்த ஆயத் எனக்கு சரி வராது. அல்லாஹ் சொல்றான், ஷிர்க்க தவிர நான் ஷிர்க் செஞ்சிருக்கிறேன், அல்லாஹ் என்ன மன்னிக்க மாட்டான். My dear respected brothers, when Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sent the message to Wahsi, please embrace Islam, you know. And Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sent the message to Wahsi, but Wahsi say, I am make kufr, you know. And how to Allah Ta'ala please give for me, you know. And he making demand, I am in kufr, you know. If I'll come embrace Islam, Allah Ta'ala not going to please go give me, you know. And he say like that, you know. After Allah Ta'ala make ayat, Allah Ta'ala really reveal the ayat. Who embrace Islam? Except only shirk, not the all sins Allah Ta'ala forgive. The first ayat, you know. And Walsi after that told, you know, I'll go to shirk, you know, and how to Allah Ta'ala forgive me. And he couldn't come. Huh? বলতেছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওয়াহশীর কাছে দাওয়াত পৌঁছাইছে যে তুমি ইসলামের মধ্যে আসো, আল্লাহ তোমাকে এরকম ইসলামে আসো। তো তখন ওয়াহশী বলল যে খবর পাঠাইছে যে আমি তো কুফরের ভিতরে আছি, হ্যাঁ, তা আমি ইসলামের মধ্যে আসলে আমি কি পাবো, আমি ইসলামের ভিতরে আসলে আমার কি হবে। তো তখন আল্লাহ পাক কি করছেন, কোন আয়াত নাযিল করছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে শিরকের গুনাহ ছাড়া সমস্ত গুনাহকে আল্লাহ পাক কি করেন, আল্লাহ মাফ করে দেন শিরকের গুনাহ ছাড়া, কিন্তু শিরকের গুনাহকে তখন ওয়াহশী বলল যে আমি তো শিরকের গুনাহের ভিতরে আছি। என்னென்ன பெரியார சொல்லலே இப்படி சின்னத்தோட இல்ல இரண்டாவது ஆயத்தை இறக்கி வைக்கிறான். இல்லா மன் தாப வ ஆமன வ அமில சாலிஹன் ஃபௌலாயிக யுபத்திலுல்லாஹு ஸய்யிஆத்திஹிம். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மூணாவது தடவை அனுப்புறாங்க. யார தூதர் அனுப்புறாங்க, இஸ்லாத்துக்கு வாங்க. அல்லாஹ் இப்படி ஒரு ஆயத்தை இறக்கி வைக்கிறான். யாரு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நல்ல அமல் செஞ்சு தௌபா செய்வாங்களோ அவங்களுடைய பாவங்கள் அல்லாஹ் நன்மைகளாக மாற்றி விடுவான். இந்த ஆயத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க. அல்லாஹ் இறக்கி வைக்கிறான். இந்த ஆயத்து வந்தோன்னு வஹ்ஷி சொல்றாரு, இது அல்லாஹ் தஆலா ஷர்த்து வச்சிருக்கிறான், இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளணும், தௌபா செய்யணும், நல்ல அமல் செய்யணும். இது என்னால செய்ய முடியாது. மூணாவது ஆயத் அல்லாஹ் இறக்கி வைக்கிறான். My dear respected brothers, after that he was told, I can't come embrace Islam, you know, because of the shirk matter. And after that Allah Ta'ala revealed second ayat. Now Allah Ta'ala revealed second ayat, who became Islam, embraced Islam, and Allah Ta'ala what do you call, he want to believe Allah Ta'ala, he want to do good deeds and into forbidden thing. என்னென்ன மூணு இது தௌபா embrace Islam first, and after that want to make tauba, you know, want to make tauba, after that want to do good amal, you know. Three condition. First want to embrace Islam, what do you call, make tauba, and want to do good amal, and the three things, you know. And Allah Ta'ala revealed that ayat, and after that Wasi told, you know, three condition. How do I do, you know, I difficult to make tauba for me, difficult to make good amal to make to me, and he refused that ayat also. First one is first tauba, good deeds, embrace Islam first. তো বলতেছিলেন তখন প্রথম তো ওই যে প্রশ্ন একটা আয়াত নাযিল হলো যে আল্লাহ পাক বললেন যে আল্লাহ পাক শিরকের গুনাহ ছাড়া সব গুনাহকে মাফ করে দিবেন। তো তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উনি তো বললেন এই কথা যে আমি তো শিরকের মধ্যে আমি শিরক করছি। তখন আল্লাহ পাক আবার দ্বিতীয় আয়াত নাযিল করলেন যে নাকি ইসলামে দাখিল হবে, যে নাকি তার উপরে তওবা করবে এবং যে নাকি এরকম ভালো আমল করবে তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মাফ করে দিবেন।
তখন সে বলল যে আমি তো বলছে যে তখন সে তখন আবার ওজোর পেশ করলো যে আমার পক্ষে কি এগুলা করা সম্ভব কিনা, এতগুলা 3টা শর্ত আল্লাহ দিলেন। তো বলে যে আমার তো এই 3টা শর্ত আমি কিভাবে পালন করবো। மேலான பெரியார்களே சகோதரர்களே, மூணாவது ஆயத்தில் இருக்கிறான், குல் யா இபாதியல்லதீன அஸ்ரஃபு அலா அன்ஃபுஸிஹிம் வலா தக்னது மிர் ரஹ்மத்தில்லாஹ் இன்னல்லாஹ கஃபூருர் ரஹீம். அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களே, நீங்க அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்திலிருந்து நிராசை அடைந்து கொள்ள வேண்டாம். அல்லாஹ் தஆலா உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னிச்சிடுவான் என்பதாக இருக்கிறான். இந்த ஆயத்தை எத்தி வைக்கப்படுகிறது. பின்னால் இஸ்லாத்துக்குள்ள வாரான். My dear respected brothers, after that Allah Ta'ala revealed third ayat, Allah Ta'ala revealed, you don't, very good. Yeah, Allah Ta'ala revealed the ayat, you don't, I'll forgive for everything, I'll forgive for everything. You don't think about I am not going to make raise your guna. Every guna I will raise to you. And third ayat Allah Ta'ala revealed, and after that was Islam. তারপরে দেখেন, তারপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখেন কত মেহেরবান, কত দয়ালু, যে তারপরে আল্লাহ পাক কি করেন, তৃতীয় আয়াত নাযিল করলেন। সেই আয়াতের মর্মার্থ কি, যেহেতু সে বলতেছে যে আমাকে ইসলাম আনতে হবে, তওবা করতে হবে, নেক আমল করতে হবে, তারপরে ক্ষমা পাবো। তো এই ইসলামের পরেও তার 2টা ধাপ আছে, তাকে তওবা করতে হবে, নেক আমল করতে হবে। এগুলা তো সে আসলে জানে না তার দ্বারা আসলে হবে কিনা হবে না। এই জন্য সে তো আসলে ক্ষমা চাইছে। সে কি চাইছে বলেন? সে আসলে কত বুদ্ধিমান, দেখেন কত চালাক চতুর হইতে পারে হেদায়েতের ব্যাপারে। সে আসলে ক্ষমা চাইতেছে আল্লাহর কাছে। তো সে তো ক্ষমা তালাশ করতেছে, কিন্তু ক্ষমার তো শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমা পাইল সে। তারপরেও সে যখন ক্ষমার ব্যাপারে তার দিলের মধ্যে হেদায়েতের তামান্না হয়েছে, তখন আল্লাহ পাক তৃতীয় আয়াত নাযিল করছেন, যে যার মর্মার্থ হইতেছে যে তোমরা আমার ক্ষমা থেকে নিরাশ হও না, আমার ক্ষমা থেকে তোমরা নিরাশ হও না, নৈরাশ্য হও না। তো আমি যাকে চাই, যত গুনাহ থাকুক তাকে তো মাফ করেই দিব। অর্থাৎ এটা তো আল্লাহ পাকের খাস মেহেরবানির মধ্যে আছে, যে আল্লাহ পাক এত মেহেরবান, আল্লাহ পাক যাকে চায় আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দিতে পারে, যত সে পাহাড় পরিমাণ গুনাহ করুক না কেন। এটা আল্লাহর কাছে কোনো যায় আসে না। আল্লাহ পাকের যখন রহমতের মধ্যে জোশ চলে আসে, তখন আল্লাহ পাক যার যে কোনো গুনাহ, যে পরিমাণ গুনাহ আল্লাহ পাক মাফ করে দিতে পারে। மேலான பெரியார்களே சகோதரர்களே, அல்லாஹ் ஹிதாயத்துக்கு வாக்களிக்கக்கூடிய 2 விஷயம். ஒன்று இனாபத், தேட்டம். அடுத்தது முஜாஹதா. முஜாஹதா 2 தான் அல்லாஹ் ஹிதாயத்துக்கு வாக்களிக்கிறான். இது 2 இருக்க வேண்டாம். ஒரு மண்ணிடத்துல அல்லாஹ் அழகான முறையில் இஸ்லாத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பான், ஹிதாயத்துக்குரிய வழிகளை திறந்து கொடுப்பான். அபூ தாலிபுக்கு இனாபத் தேட்டம் இருக்கல்ல, ஹிதாயத் இல்ல. யாரு வஹ்ஷிக்கு தேட்டம் இருந்துச்சு, அல்லாஹ் ஹிதாயத்தை கொடுத்தான். மேலானவர்களே, ஹிதாயத் எடுக்கிறண்டா இன்னும் ஒன்று செய்யணும், முஜாஹதா செய்யணும். My dear respected brothers, Allah Ta'ala giving hidayat 2 things. We want to be a we want if we have our heart open, we need to embrace Islam like this. If his qalb come, that is one. Another thing is mujahida. If we have mujahida and our heart will accepting Islam, that time Allah Ta'ala give hidayah. Abu Talib haven't got his qalb not open. That's why he haven't got hidayah. Once he got his heart open. And he did mujahida. 3 times he tried. But that purpose, the hidayah, how to come, we need to, our heart will want to open, and another thing is, we need to do mujahida. Without mujahida, haven't got hidayah, এখন ভাই দেখেন, এখন ভাই খেয়াল করে শোনেন, তো এখন এই কথাটা বলতেছে, আসলে এখানে ব্যাপারটা কি হয়েছে, আসলে আবু তালেবের ক্ষেত্রে কি হয়েছে আর ওয়াহশির ক্ষেত্রে কি হয়েছে, এখন আমরা তুলনা করি, পার্থক্য করি। এটা যখন আমি আমার বুঝে যাবো যে আমি এখন কোন জায়গার মধ্যে আছি। তো বলতেছে যে আবু তালেব ওর ভিতরে তলব ছিল না, হেদায়েতের তলব ছিল না, তার দিলটা বন্ধ ছিল। সে আসলে আল্লাহকে আসলে চাইতেছিল, আল্লাহ রাসূল ছিল তাকে আল্লাহকে দেওয়ার জন্য, কিন্তু সে আসলে আল্লাহকে যাচ্ছিল, সে তার সমাজ দেখতেছে, কম দেখতেছে, এটা সেটা দেখতেছে। আসলে তার দিল আসলে খোলা ছিল না, দিল কি বন্ধ ছিল দিল। তো আল্লাহ পাক তাকে হেদায়েত দেয় নাই।
এদিকে ওয়াহশী যদিও সে এত বড় অপরাধ করছে, কিন্তু তার দিলের মধ্যে কিন্তু হেদায়েতের তামান্না আছে। সে কিন্তু তালাশ করতেছে, ক্ষমা তালাশ করতেছে, সে যে আল্লাহ আমাকে কিভাবে ক্ষমা করবে, এবং সেটার জন্য সে মুজাহাদা করতেছে, চেষ্টা করছে কি হবে, সে আল্লাহ রাসূলের সাথে কিন্তু সে দেন দরবার করতেছে। হ্যাঁ, সে বলতেছে যে আল্লাহ তো বলছে যে আমাকে ক্ষমা করবে, শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমা করবে, কিন্তু আমি তো এতগুলা করতে পারবো না। প্রথম সে বলছে আমি তো শিরকের মধ্যে আছি। এই যে সে চেষ্টা মেহনত মুজাহা করতেছে, তো দুইটা শর্ত এখানে, যার তলব থাকবে মুজাহাদা করবে, এই দুইটা জিনিস যখন তা একত্র হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে হেদায়েত দান করবে। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তলব এবং মুজাহাদা এই দুইটার পরে আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করবে। மேலானவர்களே, கண்ணியமானவர்களே, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அத்தனை சஹாபாக்கள் முஜாஹிதாக்கு பின்னால தான் இஸ்லாத்தை எடுத்துக்கொண்டாங்க, தீன் அடைஞ்சு கொண்டாங்க, ஈமான் அடைஞ்சு கொண்டாங்க. உகைல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இந்த சஹாபி ஒரு கை ஒரு கால் ஊனமுற்ற சஹாபி, ஒரு கை ஒரு கால் ஊனமுற்ற சஹாபி. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தபூக் யுத்தத்துக்காக வேண்டி சஹாபாக்கள்ல சாமான் திரட்டி கொண்டிருக்கிறாங்க. உகைல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு பார்க்கறாங்க, என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லையே. ஒரு யஹூதி இடத்துல போறாங்க, அவருடைய தோட்டங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒரு கை ஒரு கால் வாயை வச்சு அவனுடைய தோட்டங்களுடைய அத்தனை ஈத்த மரங்களுக்கும் தண்ணீரை பாய்ச்சிட்டு ஒரு புடி ஈச்ச மரத்தை கொண்டு வந்து ஒரு முத்து, 2 முத்து கொடுக்கிறான். ஒரு முத்து நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவரிடத்திலையும் மற்ற முத்த குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறாங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உகைல் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய கார்குசாரியை கேட்டுட்டு சொல்றாங்க, உங்களுடைய எல்லாருடைய சாமான்களை விடவும் உகைல் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய சாமான் நிகழ்ச்சி என்பதாக சொல்லிட்டு அந்த குவியல் அந்த உகைல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவருடைய அந்த ஈச்சம் மலத்தை, ஒரு முத்து ஈச்சம் மலத்தை முழு குவியலுக்கு மேலாலையும் தூவி விடுறாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். My dear respected brothers, in the Tabuk battle time, Rasulullah invite to all Sahabas to come give some samans, and Ukail radiallahu ta'ala, disabled person, he haven't got one hand, one leg, and he want to do something to the battle, and he went to one Yehudi's garden. He take some water to pump the date trees, and he went very hardship he make, one hand, one leg working, and he used his mouth also, if you want to take from well water, and did very hardship to he make pump the water to garden. He got the 2-part dates, and after that he come and give to Rasulullah alayhi salam, Ya Rasulullah, you take to battle this dates, and after that Rasulullah asked Karkunsari, how do you get this one? And he explained that this much struggle, and after that I got some dates, and one part Rasulullah give to Ukail radiallahu ta'ala family, one part, so many samans full of one place, and Rasulullah keep a top of the saman, Ukail radiallahu ta'ala, that dates, if we haven't got any sacrifice, they can't get any iman, Sahabas more did the sacrifice, they haven't got wealth, health also. That time also they think, how do I am help to battles thing for thee, for thee they did more sacrifice, Maulana saying, without sacrifice we can't get anything, তোমায় দেখেন, আজকে এখন একটা উদাহরণ উনি দিচ্ছেন, এর সাথে এখন আপনাকে আমাদের একটু তুলনা করবো যে আমার অবস্থানটা কোথায়। তো বলছে সাহাবীর নাম কি? উকেল। তো বলছে যে উকেল রাদিয়াল্লাহু আনহু উনি এক সাহাবী ছিলেন, যার নাকি একটা হাত ছিল না এবং একটা পাও ছিল না, হাতও নাই একটা পাও নেই। তো যখন তবুক যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এলান করলেন যে মাল জমা করার জন্য, ঈদের আগে মাল জমা করার জন্য, তো তখন সাহাবীরা তাদের বিভিন্ন রকম মাল সামান তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী জমা করতে লাগলেন। কিন্তু উকিল চিন্তা করলেন যে আমার কাছে তো কোনো মাল সামান নাই, আমি কি করবো? ওনার জিহাদে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা আগ্রহ, আমার মাল জিহাদে যেতে হলে মালও খরচ করতে হবে, জান মাল দুইটাই লাগবে,
ওনার তো জানালেন ওনার ঘাটতি আছে, তো উনি চিন্তা করলেন যে আমি তো মাল দিই, আমার মাল দিয়ে আমি সহযোগিতা করি। উনি কি করবেন, উনি এক ইহুদির বাগানে গেলেন। ইহুদির বাগানে গিয়ে কি করলেন, উনি ইহুদির ওই যে তখন ওই মরুভূমির ভিতরে যে অনেক গভীর যে কূপ আছে, কূপ থেকে পানি তোলার কাজ নিলেন। তো কিভাবে পানি তুলবেন, তো বলতেছে উনার একটা মাত্র হাত, তো ওই হাত দিয়ে উনি আর ওই এক পা দিয়ে উনি অনেক কষ্ট করে সেই গভীর তলদেশ থেকে সেই পানি উঠাইতেছে। কেমনে উঠায়, এটা থেকে উনি ওনার মুখকেও ব্যবহার করতেছেন। চিন্তা করেন যে এক হাতের বদলে মুখকে ব্যবহার করতেছেন, আল্লাহ ভালো জানে কেমনে করছেন। উনি মুখ দিয়ে, পা দিয়ে, হাত দিয়ে যেভাবে পারছে এভাবে কষ্ট করে করে পানি উঠাই দিছেন। এবং এভাবে করতে করতে কিছু খেজুর পাইছেন, এবং 2 মুষ্টি খেজুর উনি এরকম কষ্ট করে উনি জোগাড় করছেন। এবং এই 2 মুষ্টি খেজুর উনি কি করছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে হাজির করছেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই যে আমার যুদ্ধের জন্য আপনার আমি মাল জোগাড় করছি, এটা আপনি কবুল করেন। তো বলছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়েছেন যে ওই এক মুষ্টি খেজুর কি করছে, উনি ওনাকে দিয়ে দিচ্ছেন যে তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করো। আর এক মুষ্টি করছে কি, এই যে বিশাল মালের স্তূপ হয়েছে, এই পুরা মালের স্তূপ উনি ছড়াই দিচ্ছেন। হ্যাঁ, মানে হলো এইটার জন্য যাতে পুরো মাল আল্লাহর জন্য, মানে এটা যে এত কষ্টের একটা মাল, এই মালের বরকতে যাতে পুরো মাল আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায়, এটার জন্য উনি এটাকে আল্লাহর কাছে ছড়াই দিচ্ছেন। তো বলতেছে যে আজকে মাওলানা এটা বলতেছে যে আসলে দেখেন যে সাহাবীরা তার জানে কুলাইতেছে না, কিন্তু তার দিলের ইচ্ছা যে আল্লাহর দিন জিন্দা হয়ে যায়। হ্যাঁ, এর জন্য তারা তাদের মুজাহাদা করতেছেন, কষ্ট করতেছেন। আজকে ইমানের জন্য আজকে এটা শর্ত ছিল যে সাহাবীরা এটা বুঝতে পারছিলেন যে মুজাহাদা ছাড়া ইমান আসবে না, দিন আসবে না। এটার জন্য জান মাল সবকিছু তারা কোরবান করে দিচ্ছেন। এই জন্য ভাই দোস্ত, আজকে আমাদের এটা সামনে রাখতে হবে যে আমি এরকম কতটুকু কোরবানি দেওয়ার জন্য তৈরি আছি, আল্লাহ পাক আমাকে কি কি সামর্থ্য দিয়েছে, এর মধ্যে আমি কতটুকু কোরবানি করবো। மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, சஹாபாக்கள் எல்லாரும் ஒரே தரத்தில் இருக்கல்ல. சஹாபாக்கள் பல தரப்பினர்களாக இருந்தார்கள். சிலர் அறிவாளிகளாக இருந்தார்கள், சிலர் வாலிபர்களாக இருந்தார்கள், சிலர் செல்வந்தர்களாக இருந்தார்கள். செல்வந்தர்கள் ஒரு ஆள் தன் ஹஜ்ரத் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு தன்னுடைய செல்வத்தை அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் செலவழித்து கொண்டே இருந்தார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், துன்னூரைன் என்ற பெயருடையவர் தான் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், எனக்கு 100 பெண் குழந்தைகள் இருந்தால் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நான் உஸ்மானுக்கு திருமணம் முடிச்சு கொடுப்பேன் என்றான். எதற்காக வேண்டி? அவருடைய எல்லா செல்வங்களை இதற்காக வேண்டி கொடுத்தாரு. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தாங்க உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. மேலானவர்களே, கண்ணியமானவர்களே, சஹாபாக்களுடைய வாலிபருடைய தியாகம் எப்படி, சஹாபாக்கள் அறிவாருடைய தியாகம் எப்படி? ஹஜ்ரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு, செல்வம் இருக்கல்ல, சொத்து இருக்கல்ல, குடும்பம் இருக்கல்ல, அறிவு இருந்துச்சு. அறிவதீனுக்காக வேண்டி தியாகம் செஞ்சார்கள். 5000 ஹதீஸ்களை ஹஜ்ரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலிருந்து ரிவாய் செஞ்சிருக்கிறார்கள். முஃப்தி முஆத் இப்னு ஜபல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவு இருந்துச்சு, அறிவை தீனுக்காக வேண்டி பயன்படுத்தினார்கள். வாலிபத்தை எப்படி சஹாபாக்கள் தீனுக்காக வேண்டி பயன்படுத்தினார்கள். மேலானவர்களே, கண்ணியமானவர்களே, அபூ ஜஹில கொண்டவர்கள் 2 சஹாபாக்கள், 2 வாலிப சிறுவர்கள், முஆத் இப்னு அம்ர் இப்னு ஜமூஹ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, முஆத் இப்னு அஃப்ரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இந்த 2 சஹாபாக்கள் தான் அந்த அபூ ஜஹில கொண்ட. அபூ ஜஹில் யாரு? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், ஃபிர்அவுன் ஹாதிஹில் உம்மா, என்னுடைய உம்மத்துடைய ஃபிர்அவுன் அபூ ஜஹில். அந்த அபூ ஜஹில கொடூரமானவனை கொண்டது அந்த 2 சின்ன சஹாபாக்கள். வெறுமனே 12 அல்லது 13 வயதுக்குட்பட்ட சஹாபாக்கள். வாள வச்சிருந்தா வாள் நிலத்தில் அரைக்கும் அப்படியான சிறிய சஹாபாக்கள் கொண்டார்கள். My dear respected brothers, Sahabas not like everyone say. Some Sahabas rich, some Sahabas poor, some Sahabas more young, but their wealth and health things they utilize they spend to these, what do you call, Usman raliallahu ta'ala got more wealth, he spent all wealth for because of this deed, And once time Rasulullah alayhi wasallam say, Usman, Dunnurain, he gave special name, that much his wealth Usman raliallahu ta'ala spent. And once time Rasulullah alayhi wasallam said to Sahabas, if we have 100 daughters, I will going to give to Usman, that much he helped to thee. And Abu Hurairah raliallahu ta'ala more poor,
more poor, but he got too much knowledge, He revealed, 5,000, nearly 5,000 hadith is memorized, he spent his knowledge to deen, and some youngsters, Abu Jahl, Abu Jahl attacked two young Sahabas. They both Muad ibn Amr ibn Jamu, another Sahabi, Maulana told that two Sahabis killed Abu Jahl. 12, 13 years old. They young things they spend to deen, And Rasulullah ﷺ say, my ummah, the Abu Jahl, like a Pharaoh, that much he did damage to deen, But every Sahabas, they spend, they got knowledge, they spend to deen, they got wealth, they spend to deen, the young youth strength, they spend to deen, ভাই বলতেছিলেন যে এভাবে যে যেভাবে পারছে সবাই তার তার ক্ষমতাকে দিনের জন্য উজাড় করে দিয়েছে। হ্যাঁ, তো বলছে যে সব সাহাবী তো সমান ছিলেন না, কেউ ধনী ছিলেন, কেউ গরিব ছিলেন, কেউ যুবক সাহাবী ছিলেন। হ্যাঁ, তো যার যে ক্ষমতা ছিল সে তার ক্ষমতাকে দিনের জন্য ব্যবহার করছে। হ্যাঁ, তো বলতেছিলেন যে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যে উনি এক ধনী সাহাবী ছিলেন, আল্লাহ পাক ওনাকে মাল দিছিলেন, তো কিন্তু এই মাল উনি নিজের খায়েশের জন্য পুরা করেন নাই, উনি মাল দিনের জন্য খরচ করছেন, উনি সমস্ত মালকে দিনের জন্য উজাড় করে দিয়ে খরচ করছেন। হ্যাঁ, ওসমান গনি, ওনাকে বলে ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহু। তো বলতেছেন যে এবং ওনার আরো বৈশিষ্ট্য ছিল যে ওনাকে জুলনুরাইন বলা হতো, মানে হলো যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই বিবির সাথে ওনার দুই কন্যার সাথে ওনার বিবাহ হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার দুই মেয়েকে একে একে দুই মেয়েকে ওসমান রাদিয়াল্লাহু সাথে বিবাহ দিয়েছিল। এবং ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যে দিনে নুসরত করছে এটার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত খুশি ছিলেন, বলে আমার যদি 100টা মেয়েও হইতো আমি সবগুলা মেয়েকে ওসমানের সাথে বিবাহ দিতাম। হ্যাঁ, তো এই পরিমাণ উনি দিনের খেদমত করছেন। এদিকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছে যে উনি গরিব সাহাবী ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওনাদের দিনের খেদমত কিভাবে নিয়েছেন, বলছে উনি 5000 কম বেশি হাদিস ওনার মুখস্থ ছিল, এবং উনি এটা সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস উনি, এবং উনি সমস্ত মুহাদ্দিসিনদের সর্দার উনি। তো উনি এরকম যে এলেমের দ্বারা এই উম্মতের খেদমত পৌঁছেছে। তারপরে আবু জেহেল, যাকে রাসূল বলছেন সে হলো আমার জামানার কি ফেরাউন। হ্যাঁ, তো এই আবু জেহেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত বড় শত্রু ছিল, তো এই আবু জেহেলকে হত্যা কে করছে বলেন? দুইটা বালক, যুদ্ধের ময়দানে দুইটা বালক সাহাবী, সে আবু জেহেলকে উপরে আঘাত দিয়েছে, যেটা নাকি আল্লাহ পাক এই কাজটা অন্য কারো দ্বারা অনেক শক্তিশালী বীরপুরুষ সাহাবী ছিল, তাদের দ্বারা আল্লাহ পাক খেদমতটা নিতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ পাক দুই বালককে ব্যবহার করছেন। আসলে যার দিলের ভিতরে যেটা আছে আল্লাহ জানে কার দিলে কি আছে, ওই আল্লাহ পাক দিলের জ্বালা পোড়াকে ব্যবহার করে। হ্যাঁ, ওই বালক কি বলছিল, যে বলতেছিল যে চাচা যান, আমি শুনছি যে আবু জেহেল নাকি আমার নবীকে কষ্ট দেয়, মানে কি তার দিলের মধ্যে দিনের জ্বালা পোড়া ছিল যে আবু জেহেল নাকি কষ্ট দেয়। তো আল্লাহ পাক এই জ্বালা পোড়া কবুল করে তাকে ব্যবহার করছেন। তো যখন নাকি ওই এক সাহাবী, যে সাহাবী দুই পাশে ছিল, তো বলতেছে যখন আবু জেহেল যখন ওই বদরের যুদ্ধের সময় ঘোড়া নিয়ে দম্ভ ভরে হাঁটতেছিল, তখন ওই সাহাবী বলছিল দেখো তোমাদের শিকার যাইতেছে। তখনই তারা দৌড় দিয়া একজন ঘোড়ার পায়ের মধ্যে আঘাত করছে, একজন পায়ের মধ্যে আঘাত করছে, আবু জেহেল পড়ে গেছে। তো কথা হলো যে যুবক বয়সকে আল্লাহ পাক ব্যবহার করছে। এই জন্য ভাই দোস্ত, যে যার যেই ক্ষমতা যোগ্যতা আছে, যার মাল লাইনে, যে সমস্ত লাইনে সাহাবের, যে এমনকি মহিলাদের কথা বলে না, এটা বললে আরো লম্বা বয়ান হয়ে যাবে, মহিলারাও তাদের ক্ষমতা দিয়ে দিনের সাহায্য করছে। மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு உதவியாக இருந்த அதிகமான வாலிபர்கள் யார் எடுத்துக்கொண்டாலும் வாலிபர்களாகத்தான் இருந்தார்கள். நபி அவர்களுக்கு கடைசி மட்டும் உதவியாக இருந்தார்கள். அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு 10 வயசுல இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாரு. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி ஹிஜ்ரத் போறாங்க, நபி அவர்கள் இடத்துல தூங்குறார் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு வாலிபர், வெறும் சின்னவர்,
தஃப்சீருடைய ரயீசுல் முஃபஸ்ஸிரீனா மாறினாரு. வாலிபத்தை தீனுக்காக வேண்டி பயன்படுத்தினாரு. மேலானவர்களே, கண்ணியமானவர்களே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவரோட இருந்த அத்தனை சஹாபாக்கள் வாலிபர்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி நபி அவருடைய காலத்துக்கு பின்னால தாபிஈன்களுடைய காலத்தை எடுத்துக்கொண்டா இந்த நாடுகளுக்கு, இந்த சிந்து நதியுடைய நாடுகளுக்கு இஸ்லாத்தை கொண்டு வந்தவர் வாலிபர். யார்? முஹம்மது பின் காசிம் ரஹிமஹுமுல்லாஹ். வெறும் 16-17 வயசுள்ள வாலிபர். மேலானவர்களே, கண்ணியமானவர்களே, உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு காலத்துல ஒரு சின்ன புள்ள மரணிச்சாரு. அவருடைய கிஸ்ஸா வருகிறது. அவருடைய வாலிபத்தை எப்படி பயன்படுத்தினாரு. நாளைய கியாமத்துடைய நாளையில நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், எந்த நிழலும் இருக்காது, அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷுடைய நிழலை தவிர வேற எந்த நிழலும் இருக்காத அந்த கியாமத்துடைய நாளையில் ஷாபுன் நஷா ஃபீ இபாதத்தில்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய வாலிபத்தில் தன்னுடைய வாலிபத்தை கழித்த வாலிபர்களுக்கு அல்லாஹ் விசேஷமான இடமளிப்பான். அப்படியாப்பட்ட வாலிபர்கள் தான் வாலிபர்கள். மேலானவர்களே, ஸ்பெயின எந்த துளி ரத்தம் சிந்தாமலுக்கு ஸ்பெயின இஸ்லாமிய ஹிலாஃபத்துக்கு கீழால 800 வருடங்கள் கொண்டு வந்த யாரு? தாரிக் பின் ஜியாத் ரஹிமஹுல்லாஹ். 18 வயசு வாலிபர். மேலானவர்களே, கண்ணியமானவர்களே, நம்முடைய வாலிபத்தை தீனுக்காக வேண்டி பயன்படுத்துவோம் என்றா உலகத்தில் நிரந்தரமான வெற்றி. நாளை கியாமத்துடைய நாளையில அல்லாஹு தஆலா நம்ம எப்படி வாலிபத்தை தீனுக்காக வேண்டி பயன்படுத்தினோமோ அதற்கேற்ற தகுதியை நமக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார். My dear respected brothers, for this for Deen, so many youngsters help to this Deen, as a Rasul sallallahu alaihi wasallam period. So many Sahabat are youngsters. Ali radiallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, they did more sacrifice to this Deen, if India and Pakistan, Bangladesh got what do you call Muhammad ibn Qasim radiallahu ta'ala. He also youngsters, nearly 70 years old. He's more young, And hereafter, day of judgment, they have Allah's one shadow, who spend his youth time path of Allah Ta'ala give one shadow to them, that much, youngsters help for Deen, ভাই বলতেছিলেন যে আমাদের কথা শেষের দিকে আজানের সময় গেছে, তো বলতেছিলেন যে এই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই যুবক বয়সটাকে, সাহাবীদের এই যুবক বয়সগুলোকে দ্বীনের জন্য ব্যবহার করছেন। বলছে যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, তো উনি একটা যুবক সাহাবী ছিলেন। উনি 5 জন যে বড় বড় আলেম, তার মধ্যে 3 আব্দুল্লাহ আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তো তার মধ্যে আব্দুল্লাহ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন, তিনি বহুত বড় আলেম ছিলেন। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই যুবক বয়সকে দ্বীনের খেদমতে ব্যবহার করেছেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, উনি যুবক ছিলেন। ওনার বসে উনি বলছে যে উনি তো আলী আমার তলোয়ার, তো বলছে যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যুবক বয়সকে আল্লাহ ব্যবহার করছেন। এরপরে বলছে এই জামানায়, এই কিছুদিন আগে বলছে এই যে মুহাম্মদ বিন কাসেম, যিনি নাকি এই পাক ভারত মহাদেশে, মানে আগে যে হিন্দুস্তান ছিল, এই হিন্দুস্তানে যে ইসলাম প্রবেশ করছে, যার মাধ্যমে তিনি একটা যুবক ছিলেন। এবং কত বছরের যুবক ছিলেন, যে সময়টাকে আমরা কোনো হিসাবে ধরি না, 17 বছরের যুবক ছিলেন। আমাদের দেশে এখন সেটা এসএসসি ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পরে এই 17 বছরের যুবকরা, এই বয়সের একজন যুবক বলছে যে এই পাক ভারত মহাদেশে ইসলাম ঢুকাইছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক ইসলাম ঢুকছে এই পাক ভারত মহাদেশে। বলছে তারিক বিন জিয়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ওনার দ্বারা কিছু কোনো ইউরোপ বিজয় করছেন, স্পেনকে ইউরোপে ইসলাম ঢোকার ব্যাপারে আল্লাহ পাক তারিক বিন জিয়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যুবক এক নওজোয়ানকে আল্লাহ পাক ব্যবহার করছেন। তো ভাই দোস্ত, এই বয়সটা এত দামি আল্লাহর কাছে, যেমন দুনিয়ার যারা দুনিয়াদার মানুষ তারাও যুবক বয়সকে পছন্দ করে, যুবকদেরকে খুঁজে, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যুবক বয়সকে পছন্দ করেন। এই জন্য বলছে হাশরের ময়দানে 7 ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক কি করবেন, আরশের ছায়ার নিচে স্থান দিবে। তার মধ্যে এক ধরনের লোক তারা যুবক বয়সকে আল্লাহর ইবাদতে কাটাইছে, যুবক বয়সে দ্বীনের খেদমত করছে, যুবক বয়সকে আল্লাহ দ্বীনের কাজে ব্যবহার করছে। এই জন্য ভাই দোস্ত, আমাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ, বলছে তাশকিল, আমাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ যে আমাদের সামনে ইস্তেমা আসতেছে,
দিনের বহুত বড় তাকাজা। বলছে যে আজকে তো ওই যে সাহাবীরা যেটা তারিক জিয়াদ রহমতুল্লাহ যেটা করছেন, মোহাম্মদ হাসান যেটা করছেন, আলী করছেন, ওসমান যেটা করছেন, এটা ওই একই মেহনত। দাওয়াত তাবলীগের কাজ ওইটাই মেহনত। আজকে দাওয়াত তাবলীগের নামে আজকে সারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাক আবার চালু করে দিছে। এখন অপেক্ষা শুধু আমি এই মেহনতের মধ্যে যোগ দিব। বলছে আমি যদি মেহনতের মধ্যে যোগ দেই আর মেহনত করতে থাকি, আল্লাহ পাক আমার দ্বারাও কাজ দিবেন। ভাই বর্ণের শুরুতে বলছেন আল্লাহ পাক দিল দেখেন, কি দেখেন বলেন? দিল। কার দিলের ভিতরে বেচায়নি আছে। ওই যুবক কি বলছিল যে আমি শুনছি কে নাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট দেয়, তো আল্লাহ পাক এটা কবুল করে নিয়েছে। তো আজকে দেখেন সারা দুনিয়াতে কি অবস্থা। কত মানুষ সারা দুনিয়াতে প্রায় 600 কোটি আছে মুশরিক যাদের ইমানই নাই, আর 200 কোটি যে মুসলমান আছে তাদের ইমান নিবু অবস্থা। বলছে যে আজকে সারা দুনিয়াতে সফর করেন, যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাউথ আমেরিকা দিয়েছিলেন, তো বলতেছে যে ঘরে ঘরে মানুষ ইসলাম ছেড়ে দিতেছে। একটা সময় ছিল যে মানুষ দলে দলে ইসলামে ঢুকতেছিল, এখন অবস্থা এরকম মানুষ দলে দলে ইসলাম থেকে বাইরে হইতেছে। কেন? বলছে আমি আমার যুবক বয়স নিয়ে পড়ে আছি, আমি আমার মাল নিয়ে পড়ে আছি, আমি আমার মালের মায়া করতেছি, আমি আমার সময়ের মায়া করতেছি, আমি আমার চাকরির মায়া করতেছি। এদিকে আল্লাহ রাসূলের দ্বীন বিলুপ্ত হইতেছে, মানুষ ঈমান ছাড়া আমল ছাড়া দুনিয়া থেকে যাইতেছে। তো আজকে ভাই দোস্ত, আল্লাহ পাক আমাকে যা আজকে যদি কাল হাসরের মধ্যে জিজ্ঞেস করে তোমাকে যুবক বয়স দিছিলাম, তোমাকে মাল দিছিলাম, মেধা দিছিলাম, সাহাবীরা তাদের যেভাবে পারছে তাদের তার ক্ষমতাকে দিনের জন্য ব্যবহার করছে, আমি কি জবাব দিব? এই জন্য ভাই দোস্ত, যে সুবর্ণ সুযোগ যে আমি এরকম সবাই ইস্তেমাতে যাবো ইনশাআল্লাহ, এবং ইস্তেমা থেকে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। যেরকম নাকি এনারা এরকম আল্লাহর রাস্তায় 4 মাসের জন্য 1 বছরের জন্য বের হয়ে আসছে, এই বলছে যে এটা আসলে আল্লাহ দুনিয়া, আসলে এটা খুবই এটা মুকাদ্দারের জিনিস। আমার তকদিরে যেটা আছে এটা আমার হাত ছাড়া হবে না। আমার যেটা রিজিক আমার জন্য আল্লাহ বরাদ্দ রাখছে, এই রিজিকের শেষ দানা না ভোগ করে দুনিয়া থেকে আমি যাবো না। এই জন্য যে দিনকে আগে রাখবে আল্লাহ পাক তার দুনিয়াকে তার গোলাম বানাই দিবে। আজকে আমরা দুনিয়াকে আগে রাখছি, বলছে দিন আমার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। এই জন্য সবাই নিয়ত করতে পারেন ইনশাআল্লাহ ইস্তেমা যাবো ইনশাআল্লাহ। সবাই ইস্তেমা নিয়ত আছে ইনশাআল্লাহ, কাজটা নিয়ত আছে ইনশাআল্লাহ। এই জন্য বলেন সবাই নিয়ত করেন ইস্তেমা থেকে 4 মাসের জন্য ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ 4 মাসের জন্য ইস্তেমা থেকে